morning to all of you. I, Dr. Ruchi Shatri Patel, is going to start a lecture series for pattern recognition. So starting with what pattern is and what pattern recognition. As this is the first lecture, so I am going to give you the introduction about pattern recognition and various basic definitions. Then in the upcoming lectures, I am going to cover the syllabus. Okay. So what pattern is? Pattern means any of the sequence that is repeating itself by following some set of rules or specifications. Okay? हम इसको ऐसा समझें, कोई भी पैटर्न है, सपोज अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो सपोज ये आपका स्क्वायर है, ट्राइंगल है, सर्कल है. अब अगर हम फिर से स्क्वायर बनाते हैं, डैश, सर्कल. So if I am going to ask you what comes here, you will directly say triangle. How? Because you have gone through this pattern. This is what? One pattern. As this is, it is one of the sequence that is what repeating itself by following some rule. ये एक क्या हो गया आपका? पैटर्न हो गया, सीक्वेंस हो गया. ये इस सीक्वेंस को क्या कर रहा है? खुद को रिपीट कर रहा है. इस सीक्वेंस में फर्स्ट क्या है? स्क्वायर, देन क्या है? ट्राइंगल, देन क्या है? सर्कल. ये पूरा एक सीक्वेंस बन गया. इट इज वन ऑफ द सीक्वेंस. एंड इफ दिस सीक्वेंस इज रिपीटिंग इटसेल्फ, it is becoming what? One pattern. One times, again if it is repeating itself, next time. So what? This is one of the sequence that is repeating by following some rule. What is the rule? That first square will come, then triangle will come, then circle will come. This is simple rule. Okay? So I think the meaning of pattern is clear to you. Again in short I am repeating what pattern is. Pattern is a sequence that is going to repeat itself by following some set of rules. Pattern can be an object, a set, or any event also, and it can be any process also. For example, कोई भी अगर हम event की बात करते हैं, right? So in the morning time, you are going to your office. At suppose you are having a punching time of suppose 10 a.m. So you are going every day. Okay, you are just waking up in the morning, you are going to the office, then again in the next day you are waking up and again going to the office. So this is what? An event. You are repeating this from Monday to Friday suppose. Then again if it comes on next Monday, then definitely you are going to what? After waking up you are going to your office for the punching. So what? It is an event. Event that is repeating itself, it is forming one pattern, right? So any process, it can be an object or it can be any event also, right? Object की बात करते हैं अगर हम, so एक apple, okay? It's a pattern of a fruit class, right? Apple, it is having various features, it is repeating itself. एक basket है, उसमें बहुत सारे fruits हैं. हम कहते हैं अगर कि आपको fruits का bifurcation करना है, आप क्या करेंगे? एक pattern find out करेंगे. Suppose in a basket, an apple is there, a banana is there, and an orange is there, and you have to what? Bifurcate them. A single fruit basket consists of the various what? Objects. You are bifurcating them. So what you are going to do? Your brain, you are going to perform mental actions. ठीक है, हम एक मानसिक क्रिया के थ्रू गुजरेंगे. By the mental actions, you are going to access the information of apple. कि okay, if it is red in color, if it is having this kind of shape, it is an what? Apple. So apple को हम एक basket में करेंगे. You are going to see the banana, its features, and you are going to what? Collect all the banana and will put in a basket. Okay? So what your brain is doing? It is seeing an object and finding the same kind of object and just keeping it in a basket. So this is known as what? Pattern recognition. Okay? So pattern, it is a sequence that is going to repeat itself by following some set of rules, right? Now what is pattern class? So I have given you the example. If suppose an apple is there, it is what? One pattern. If it is what? Repeating itself, this is what? Pattern. Now all these are what? Suppose apples are there, so they are following to what? An apple
class. If I am talking about the pattern name is what? Apple. And to which class? I'm talking about what? Pattern class. So what is the meaning of the pattern class? The same kind of patterns grouped together if they are what? Sharing some kind of common attributes. What is the common attributes? All are red in color, all are what? Sweet in taste, all are having what? Different same texture. So pattern, it is pattern class, it is a group of patterns sharing some common attributes. Okay, so what pattern class is going to be? The pattern class name is going to be apple. And if you are talking about individually, it is pattern. In a group, it forms a pattern class. Okay, now coming on to what? Recognition, right? So let's see what recognition is. So recognition is made from two words, re plus cognition. Re, you all know re means बार बार repeat करना. Cognition, what is the meaning of cognition? तो अभी हमने बताया आपको, cognition का मतलब होता है by some mental action or process you are acquiring your knowledge through some thoughts or processes. ठीक है, आप एक मानसिक क्रिया के थ्रू पहले तो नॉलेज को गेन करते हैं, फिर आप क्या करते हो? किसी थॉट्स या प्रोसेस के थ्रू बार बार उस नॉलेज को क्या कर रहे हो? गेन करके रिफाइनमेंट कर रहे हो. दिस इज नोन एज व्हाट? कॉग्निशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्लास में आई, वहां पे सपोज 60 स्टूडेंट्स आ गए, तो एक साथ तो हमको 60 स्टूडेंट्स के नाम याद नहीं होंगे, राइट? फर्स्ट डे आई एंटर्ड द क्लास and I have seen some of the students, 60 students were there, but at a time I can learn a name of maximum of 10 to 20 students. ठीक, क्लास में हम गए, हमने स्टूडेंट का फेस देखा, ठीक है, हमारे ब्रेन में उसका एक इमेज बन गया. सो व्हाट आई एम कॉग्नाइजिंग, आई एम रिसीविंग द सिग्नल्स फ्रॉम माई आईज, माई ब्रेन इज मेकिंग एन इमेज एंड इट्स नेम. ओके, एक डेटाबेस तैयार हो रहा है कि भाई ये फीचर्स है, तो इसका नाम सपोज आकाश है, राइट? तो ऐसे करके हमने 10 से 20 स्टूडेंट्स के नेम को क्या कर लिया? लर्न कर लिया. दिस इज नोन एज व्हाट? कॉग्निशन. अभी सिर्फ कॉग्निशन हुआ है. मे बी मैं दूसरे दिन आऊं और आकाश का जो नाम मैंने उस दिन लर्न किया था, दूसरे दिन मुझे याद ना आए, ठीक, तो मैं क्या करूंगी? रिकॉग्निशन, फिर से कॉग्नाइज करूंगी, राइट? फिर से मेरे ब्रेन सिग्नल्स, उस बच्चे के फेस से सिग्नल्स जो रहेंगे आईज के थ्रू मेरे ब्रेन में जाएंगे, वापस से मैं अपने रिपोजिटरी को, डेटा सेट को वापस से क्या करूंगी? मॉडिफाई करूंगी और फिर से लर्न करूंगी. तो अगेन मैं क्या करूंगी? रिकॉग्नाइज करूंगी. ओके, फाइंड आउट करूंगी. ओके, नाउ ही इज व्हाट? आकाश. आई व्हाट? रिकॉग्नाइज्ड. ठीक है, मैंने एक पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ, ये अगर इस टाइप का फेस है, ये डिफरेंट फीचर्स हैं, तो ये कौन होगा? ये आकाश होगा. Getting it or not? So this is what? Pattern recognition. Pattern को देखना. Pattern मतलब क्या? Sequence that is repeating itself by following some set of rules. तो इसका मतलब क्या हो गया? Pattern. और recognize करना मतलब पहले एक बार इसको cognize कर लेना, knowledge को gain कर लेना by following any thoughts or processes. एक बार आपने cognize कर लिया, फिर आप क्या करते हो? Recognize. दोबारा जब उसको देखते हो तो आप पहचान जाते हो. That is known as what? Recognition. Cognize करना, पहली बार में सीखना, याद करना, दूसरी बार में recognize करना मतलब पहचानना. This is known as what? Pattern recognition. Okay? So this is the introductory class for the pattern recognition. कि pattern recognition आखिर है क्या? I have already told you all, pattern recognition it is a sub branch of machine learning. Okay? क्यों ये machine learning की sub branch है? Because pattern रिकॉग्नाइज कब करेगा, है ना? हम किसी चीज को रिकॉग्नाइज कब कर पाते हैं? हम किसी चीज को पहचानते कैसे हैं? तो हमारा ब्रेन देखता है चीजों को, सिग्नल्स को स्टोर कर लेता है, दोबारा जब हम उस चीजों को देखते हैं तो हमारे ब्रेन की इंटेलिजेंसी की वजह से, है ना, बायोलॉजिकल इंटेलिजेंसी की वजह से हम चीजों को पहचान पाते हैं. अब हमको यही रिकॉग्निशन किससे करवाना है? मशीन से. वी वॉन्ट दैट आवर मशीन्स आर गोइंग टू परफॉर्म अ पैटर्न रिकॉग्निशन. सो the same process that human beings is following for a pattern recognition, we have to implement that process in the machines. ठीक, मशीन को भी क्या करना पड़ेगा? पहले तो सिग्नल्स लेके वो क्या कर ले? सीख ले.
राइट। पैटर्न पहले बताना पड़ेगा उसको कि भाई ये पैटर्न होते हैं। एक बार उसने सीख लिया, फिर उसको क्या कराना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करवाना पड़ेगा। तो रिकॉग्नाइज करवाने के पहले उसको याद करवाना पड़ेगा, लर्न करवाना पड़ेगा। फ्रॉम देयर इट कम्स व्हाट, मशीन लर्निंग। सो वंस द मशीन इज गोइंग टू कलेक्ट द डेटा, learn it, after that what, recognize it. So in the syllabus of the pattern recognition we have to go through the various machine learning algorithms also. After going through the machine learning algorithms various we are going to perform various pattern recognition techniques, right? So this is all about the very first introductory lecture which has covered the meaning of the pattern and the meaning of the recognition. For the basic definitions, right? Basic definition of pattern, basic definition of pattern class, basic definition of pattern recognition. For all these class, for the notes of these basic classes, a link is given in the comment box. From there, you just have to click it and download your notes for the basic class. Thank you, students. In the upcoming lecture, I will start continuing from the unit number 1. In the at last of this video, I'm just fleshing out the syllabus of the RGPV. In the upcoming classes, we are going to cover the various topics from this syllabus. Thank you.